Hello everyone, good evening guys. Good evening and welcome to the YouTube channel of PRATHAM Test Prep. Myself Juhi Sharma, and here we are with yet another current affairs session which covers the current affairs from the 25th of October to the 30th of October. But before that, tell me whether I am clearly audible to all of you. I hope I am clearly audible to everyone. Right guys, good evening, and yes, today is Monday, and here we are again with a current affairs session which starts at 8:30 p.m. So every Monday and Friday at 8:30 p.m. we have our current affairs session which covers the current affairs of the last 2 to 3 days. Right? Okay, Ananya, good evening. Now, I hope you all are doing well. Hi, Sayansh. I hope everybody is doing well and you are ready for the current affairs session. If you are new to the channel, I would request you all to please subscribe to PRATHAM Test Prep. Right, hit that subscribe button. In which center do you teach? I don't know what is your name. I can't see your name. Would you please tell me your name, guys? Right, the person who's asking this. So yeah, what we study is we study current affairs. We will be going through current affairs in this particular session, and also hit that like button. It's an earnest request to hit that like button. It always motivates the speaker, it always motivates the mentor, the host. Right, subscribe to the channel if you haven't done already, because only if you are a subscriber you will be able to do live chat with us. Right? Okay, Ritu. So I take online batches in Pratham, right? I take online batches, and if we talk about the offline one, so I teach in the Vasant Kunj Center, right? Now, without wasting too much of time, let's quickly see these current affairs from the 25th to the 30th of October. But before that, tell me, have you guys seen the previous lectures? Have you guys seen the previous videos? I hope you were there in the previous videos, and if you have not seen the previous sessions, I would request you all to please go through that, because these are very, very important, and try to make notes from that as well. Right? So, let's see the first news of the day. We have Indian Infantry Day observed on the 27th of October. Right? Indian Infantry Day. Now, what kind of news is this? What is the category of this news? What is the category of this news? Indian Infantry Day. I've told you, there are certain categories of the news that we have. So what is the category? This is from important days, right? This is from the category important days, right? Now, if you see the image over here, बेटा आपको क्या दिख रहा है? आपको बहुत सारे इस पर्टिकुलर इमेज में आपको बहुत सारे एज इन सोल्जर्स दिख रहे होंगे विद लाइक गन्स एंड इन देयर हैंड्स, राइट? सो इंडियन इन्फेंट्री डे क्यों ऑब्जर्व होता है? दिस पर्टिकुलर डे इज ऑब्जर्व टू पे ट्रिब्यूट टू आवर सोल्जर्स. ओके, टू पे ट्रिब्यूट टू आवर सोल्जर्स वी ऑब्जर्व इंडियन आर्मी इन्फेंट्री डे, right? But do not get confused. There are 2 days. Army Day is different and Indian Army Infantry Day is different. Okay? Now, Indian Army Infantry Day specifically किसके लिए होता है? उन soldiers को tribute पे करने के लिए होता है, उन soldiers को homage पे करने के लिए होता है जिन्होंने ड्यूटी के टाइम पे they got martyred. राइट, ड्यूटी के टाइम पे जिनकी लाइफ सैक्रिफाइस हुई है उनके लिए होता है. एंड आर्मी डे इज द डे विच इज ऑब्जर्व्ड इन जनरल, राइट, ऑफ द आर्मी, इंडियन आर्मी. एंड इंडियन इन्फेंट्री डे किसके लिए होता है? टू दोज सोल्जर्स हु हैव while they are in their line of duty, and क्या है आपका उसमें उनकी अगर शहीद हो जाते हैं, कुछ है, उनके लिए ये डे ऑब्जर्व होती है, राइट? Now, ma'am, can question about Unity Day come? Yes, definitely, Sayansh. Definitely, they can ask you question on Unity Day as well, right? Now, ये हम कब से observe कर रहे हैं? This we are observing since the year 1947.
Okay, since the year 1947 इंडियन आर्मी इन्फेंट्री डे बेसिकली जो है वो आपको ऑब्जर्व हो रहा है। ये कुछ आपका एक ट्राइबल इन्वेजन हुआ था, राइट, फ्रॉम द पाकिस्तान साइड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में एक ट्राइबल इन्वेजन हुआ था आपका। एंड उस टाइम पर बहुत सारे मैन दे हैव laid down their lives, and तब से since the year 1947 we are observing this Indian Army Infantry Day. Okay, and since अगर हम 1947 से ऑब्जर्व कर रहे हैं, अभी हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया, दैट इज दी 75th ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, तो ऑफकोर्स सी बात है इंडियन आर्मी इन्फेंट्री डे का भी कौन सा एडिशन होगा? दिस इज दी 76th एडिशन। Okay, this is the 76th edition of this Indian Army Infantry Day. अब कुछ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए पता होना बहुत जरूरी है। आपको मैंने बताया भी था दैट आर्मी डे कब ऑब्जर्व होता है। आर्मी डे बेसिकली वी ऑब्जर्व ऑन, राइट, वी ऑब्जर्व आर्मी डे ऑन द 15th of January. Okay, we observe Army Day on the 15th of January, and इंडिया में आर्मी डे 15th of January को होता है, and इंडियन आर्मी इन्फेंट्री डे कब होता है? इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन दी 27th of October. प्लीज रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। आप अगर क्वेश्चन आता है प्रॉपरली रीड करो इन ऑर्डर टू आंसर दिस। ओके, वेदर उन्होंने आपसे आर्मी डे पूछा है या उन्होंने आपसे इंडियन इन्फेंट्री या इंडियन आर्मी इन्फेंट्री डे पूछा है, ठीक है, ये आपको क्लैरिटी यहाँ पे होगी। अच्छा, उसके बाद अगर हम आर्मी की बात कर रहे हैं, सारी चीजों की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हु इज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, राइट। अभी ये न्यूज में था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इट इज जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अच्छा, किसी को वो 8-9 महीने पुरानी एक बहुत ही दुखद एक आपका होता है ना, बहुत ही एक सैड इंसिडेंट हुआ था विद द हेलीकॉप्टर क्रैश। उसमें एक बहुत ही फेमस पर्सन ही डाइड ऑन दैट हेलीकॉप्टर क्रैश। कौन थे वो? हु वाज दैट पर्सन जो बहुत ज्यादा न्यूज में थे? It is approximately news of 9 to 10 months ago. Very good, General Bipin Rawat. Yes, very good Tisha. It was General Bipin Rawat. So General Bipin Rawat का जब एयरप्लेन क्रैश में डेथ हुई थी, right, along with other people as well, वो पर्टिकुलर पोस्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो पोस्ट थी, वो जनरल बिपिन यादव के डिमाइस के बाद से पूरा 8-9 मंथ तक वो वेकेंट रही थी। बट नाउ जनरल अनिल चौहान हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो किसके बाद अपॉइंट हुए? ही हैज बीन अपॉइंटेड आफ्टर जनरल बिपिन रावत। ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। एंड वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? इट इज लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू। लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू इज द वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक, इंडियन आर्मी कब फाउंड हुआ था? 1895 में हुआ था आपका इंडियन आर्मी फाउंड, 1 अप्रैल 1895 को। एंड अगर आपको पता हो, हमारी इंडियन आर्मी अगर हम वर्ल्ड में कंपेयर करें, इट इज द 4th स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, राइट। इंडियन आर्मी इज द 4th स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। Moving on to the next news, we have WHO Global Tuberculosis Report 2022. Now, again, WHO क्या? WHO stands for World Health Organization. Okay? World Health Organization है, ठीक है। सायांश बेटा, मैंने बताया अभी आपको, I have just told you that कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में जो भी हमारी इंफॉर्मेशन थी, I have told you just. ठीक है सायांश। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द ग्लोबल ट्यूबरक्यूलोसिस रिपोर्ट 2022, कोई भी रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए? फर्स्ट थिंग कि वो रिपोर्ट रिलीज या पब्लिश कौन करता है। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड नो, दैट रिपोर्ट इज रिलीज्ड और published by which agency, which organization, which body. That's the first thing you should know. Released or published by. तो कौन publish किया है? Global Tuberculosis Report is published by the World Health Organization, which is WHO. Right? Now, for the first time, ये जो है आपकी जो रिपोर्ट है ग्लोबल
ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट है। ऑब्वियसली बात है, किसके बारे में बात हो रही होगी बेटा यहाँ पे? अगर मैं ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस की बात कर रही हूँ, सो किस चीज के बारे में ये रिपोर्ट होगी? ऑफ कोर्स द ट्यूबरक्लोसिस, राइट? ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में वी ऑल्सो कॉल इट एज टीबी। ओके, ट्यूबरक्लोसिस इज ऑल्सो नोन एज टीबी। तो इस बार देखा गया कि अगर मैं बात करती हूँ अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, it was seen that since 2020 the number of people who were infected from TB has significantly risen, right? number of people जो TB से इन्फेक्ट हुए ना, वो एकदम से वो नंबर राइज हुआ। 2020 में वो नंबर 4.5% राइज फ्रॉम 2020 था। 1.6 मिलियन पीपल डाइड, राइट? 2021 की अगर मैं बात करूं तो 10.6 मिलियन पीपल डाइड वर्ल्ड वाइड, right? Imagine just by this tuberculosis, getting infected from tuberculosis, and अगर आप एक चीज देखो, ये जो नंबर है, राइट, अगर आप डेटा के अकॉर्डिंग देखो तो ये पैंडेमिक कोविड उसके ड्यूरेशन में ये नंबर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली राइज हुआ है। ठीक है, सो फॉर द फर्स्ट टाइम देयर इज अ सिग्निफिकेंट राइज इन द नंबर ऑफ पीपल हु हैव बीन इन्फेक्टेड फ्रॉम टीबी और ट्यूबरक्लोसिस। ठीक, नाउ 2020 से 4.5% राइज फ्रॉम 2020 है, एंड 2021 में वी हैड 10.6 मिलियन पीपल हु डाइड, एंड earlier there were 1.6 million people who died. Now again, these data, these statistics are not that important, right? No one will ask you very direct questions on this, but again they might ask you, if you're a CLAT aspirant, if you're an AILET aspirant, they might ask you that in which year, right, it rose significantly, in which year, whether in 2020 or in 2021 it was less or more. Are you guys understanding this? I hope you guys are understanding this. Now अगर मैं specifically बात करती हूँ उन countries की जिसमें वो TB का बहुत ज्यादा burden है, of course ही बात है, अगर ये 2022 की रिपोर्ट है तो अभी तो पूरा 2022 निकला नहीं है, राइट? 2022 में we have analyzed the data of 2021. Of course सी बात है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, that how these report works, right? So in the year 2022 we have analyzed the data of 2021, and according to that data हम ये देख रहे हैं that इंडिया हो गया आपका रशिया हो गया, पाकिस्तान, चाइना, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, ये ऐसे आपके 6-7 नेशंस हैं जिनका बहुत ज्यादा बर्डन है, जिनके केसेस बहुत ज्यादा हैं ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन द ईयर 2021, राइट? नाउ अगर हम इंडिया का देखें, राइट, इफ आई टॉक अबाउट इंडिया में 2021 का अगर हम टीबी का इंसिडेंस देखें तो 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर, राइट, 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर 210 जो पीपल है, 210 पर 1 लाख पॉपुलेशन एज कंपेयर टू द बेसलाइन ईयर ऑफ 2015, जब आपका कब था, जब आपका 256 पर लाख ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया थी, राइट? उसके बेसलाइन पे अगर हम देखें 210 पीपल पर 1 लाख पॉपुलेशन आर इन्फेक्टेड फ्रॉम टीबी, मतलब बहुत ज्यादा इन्फेक्शन रेट है। नाउ ये तो आपका पता चल गया कौन कौन से जो कंट्रीज हैं आपके इन्फेक्टेड हैं। आपका है इंडिया, आपका है पाकिस्तान है, आपका चाइना है, आपका इंडोनेशिया है, साउथ अफ्रीका है, राइट? देन यू हैव फिलीपींस, ओके? सो दीज आर द नेशंस विच आर इन्फेक्टेड फ्रॉम टीबी, ओके? बट अगर मैं आपको WHO के बारे में बताऊं, जो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, अगेन आई एम रिपीटिंग दैट फॉर ऑल ऑफ यू, दैट few things which are really important whenever you are studying about an organization. ठीक है, again I'm repeating, whenever you are studying about an organization, there are few things that you should know. पहला क्या है, दैट वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपको ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स पता होने चाहिए, WHO के हैं जेनेवा स्विट्जरलैंड में। दूसरा है कब आपका स्टैब्लिश हुआ था, सो WHO गॉट स्टैब्लिश इन द ईयर 1948। एंड तीसरा है हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO। सो एज ऑफ नाउ द करंट डायरेक्टर जनरल इज डॉक्टर टेड्रस एडनम गेब्रेस, और वो कहाँ से है, ही इज फ्रॉम इथियोपिया। आई थिंक दिस वाज अ फैक्ट दैट आई wasn't able to tell you in the last session, I believe, but as I've told you now, he's from Ethiopia, right? So that was all about this particular report that got released by WHO. Number one, किसने ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट निकाली, WHO ने निकाली। WHO के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है।
सेकेंड पॉइंट है किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ? इट गॉट स्टैब्लिश इन द ईयर 1948. हु इज द डायरेक्टर जनरल? टेड्रस एडनम गेब्रेयेसस. कहाँ से है? इथोपिया से हैं. एंड इज इंडिया पार्ट ऑफ दो 7 नेशंस जिसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट है ऑफ टीबी इन्फेक्टेड केसेस? यस. ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर report. I hope it is clear to everyone. Moving further, we have Accession Day of Jammu and Kashmir observed on the 26th of October. Right? Accession Day. Now, किस को 2020 का वो एक इंसिडेंट याद है जब आर्टिकल 370 and 35A got abrogated? After the abrogation of Article 370 and 35A, Article 370 सबको याद है ना, जब आपका it got abrogated in the year 2020 for the first time, right? So for the first time आपका क्या हुआ था? एक पब्लिक हॉलीडे इशू किया गया था, एक पब्लिक हॉलीडे ऑब्जर्व किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में, राइट? फॉर द फर्स्ट टाइम जैसे ही आपका आर्टिकल 370 35A जो है वो हटा ऑन 15th of August 2019, राइट? 5th of August 2019 को जैसे ही आपका एब्रोगेशन ऑफ दीज आर्टिकल्स हुआ 370 and 35A, उसके जस्ट एक साल बाद एसेशन डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया, राइट? एंड ये कहाँ पे ऑब्जर्व हुआ? जम्मू एंड कश्मीर जो हमारी यूनियन टेरिटरी है उसमें, राइट? नाउ क्या ये हमारा एसेशन डे पूरा मतलब नेशनल वे में ऑब्जर्व होता है? नो, इट इज अ पब्लिक हॉलीडे. इट इज एन ऑफिशियल पब्लिक हॉलीडे जो 2020 से स्टार्ट हुआ आपका. और ये जो ऑफिशियल आपकी जो हॉलीडे है ये बेसिकली आफ्टर दीज आर्टिकल्स गॉट एब्रोगेटेड तब से शुरू हुआ. और ये कहाँ पर है? ये आपकी है इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ओनली. तो एसेशन डे जो है दैट इज अ पब्लिक हॉलीडे इन द यूनियन टेरिटरी, राइट? अच्छा, एसेशन डे इसके अलावा भी इस डे का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है. क्या है आपका कि उस टाइम पे किस टाइम पर? 1947 के टाइम पर जो जम्मू एंड कश्मीर के जो महाराजा थे, इट वाज अ प्रोविंस, राइट? तो जो जम्मू एंड कश्मीर के जो महाराजा थे उनका नाम हरि सिंह जी था. उन्होंने एक एसेशन डॉक्यूमेंट आप बोल सकते हो वो साइन किया था. साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन टू बिकम पार्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड. एंड यहाँ पे किसकी बात हो रही है ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड में? यहाँ पे ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड में बेटा किसकी बात हो रही है? हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया. We are talking about India, right? So यहाँ पर जो हरि सिंह जी ने 1947 में एक एसेशन जो डॉक्यूमेंट है वो साइन किया था, that was about that. And 2020 में फर्स्ट टाइम इसका यूनियन टेरिटरी में ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इसकी क्या ऑब्जर्व हुई? इसकी फर्स्ट पब्लिक हॉलीडे या ऑफिशियल पब्लिक हॉलीडे गॉट ऑब्जर्व्ड, राइट? नाउ जो मैं आपको बता रही हूँ एसेशन डॉक्यूमेंट, ऑफकोर्स सी बात है, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, राइट? महाराजा हरि सिंह जी ने जो है वो साइन किया था. मैंने आपको बताया था इट वाज अ प्रोविंशियल स्टेट और प्रिंसली स्टेट जम्मू एंड कश्मीर. कब साइन हुआ था? 26th of October 1947 को, राइट? आई होप इट इज क्लियर टू यू. सो आपका इसी वजह से 26 अक्टूबर बनता है एसेशन डे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ओनली. सो अगर आपको कोई स्टेट स्पेसिफिक अफेयर का पूछता है, सो दिस इज अ स्टेट और यूटी स्पेसिफिक अफेयर, राइट? इट इज अ स्टेट और यूटी स्पेसिफिक अफेयर. ओके, नाउ moving on to the next news, we have Diwali to be a public school holiday in New York City from 2023. Now ये भी एक काफी प्राउड मोमेंट था हम सबके लिए जब we know over 2 lakh Indians, they are Sikhs, they are Buddhist, they are Hindus, they are Jain, right? So over 2 lakh people, Indians are there in New York, right? And they observe Diwali as a festival. And जो वहाँ के मेयर हैं जिनका नाम है एरिक एडम्स, उन्होंने अनाउंस किया कि अगले साल से यानी कि 2023 से 2023 से न्यूयॉर्क सिटी में एक पब्लिक हॉलीडे हुआ करेगा जो कि होगा दिवाली का, राइट? तो ये आपका अनाउंसमेंट की है.
जो आपके न्यूयॉर्क सिटी के जो मेयर हैं मिस्टर एरिक एडम्स, उन्होंने, एंड ये जो फेथ है उन लोगों का, उन 2 लाख न्यूयॉर्कर्स का फेथ जो है, जो कि हिंदूज हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, सिख्स हैं, राइट, उनका जो फेथ है टू सेलिब्रेट दिस occasion, to celebrate this festival of lights, to celebrate this just to have a celebration in their homes, what they have done, they have given them a public holiday, राइट. एंड जो एडम्स हैं उनके साथ एक न्यूयॉर्क असेंबली की मेंबर भी थी जिनका नाम था जेनिफर राजकुमार, एंड उन्होंने ये लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस किया कि भाई दिवाली को न्यूयॉर्क सिटी में क्या होगा, दे विल डिक्लेयर एज एन ऑफिशियल हॉलीडे. ओके, नाउ इसके अलावा एक और डे होता था वहां पे जिसको बोलते थे, ये एनिवर्सरी डे करके बोलते थे. इन्होंने अब एनिवर्सरी डे खत्म कर दिया है. एनिवर्सरी डे का रिप्लेसमेंट दे हैव गॉट दिस, मतलब वो छुट्टी इन्होंने काट के दे हैव गिवन अप दिस दिवाली का एक पब्लिक स्कूल हॉलीडे का छुट्टी, राइट. एंड ये बेसिकली उन्होंने क्या किया, बिकॉज उन्होंने एक चीज भी बोली कि न्यूयॉर्क में बहुत सारे जो इंडियंस हैं या बहुत सारे वो लोग जो दिवाली ऑब्जर्व करते हैं उनका नंबर सिग्निफिकेंट वे में राइज हो रहा है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे हैव गिवन दिस पब्लिक हॉलीडे. एंड इसीलिए उन्होंने वो जो एनिवर्सरी वाला था, एनिवर्सरी डे जो था, उसको उन्होंने they have just said it as an obscure या फिर antiquated day, मतलब not very relevant day as compared to Diwali. So they have eliminated that leave and they have included a Diwali leave for New York City. किसने अनाउंस किया था? मेयर एरिक एडम्स ने. Okay, so it's a very good news for us. Now moving on, we have the next news, which is Chinese President Xi Jinping third term in power, right. यहाँ पे बात हो रही है चाइना के प्रेसिडेंट की, मिस्टर शी जिनपिंग, राइट. थर्ड टर्म है उनका, राइट. थर्ड टाइम ही हैज क्रिएटेड हिस्ट्री, राइट. एंड दिस इज हिज थर्ड 5-year टेन्योर. ओके, बेसिकली थर्ड टाइम का मतलब है थर्ड 5-year टेन्योर. नाउ पहली बार ये इलेक्ट हुए थे, द फर्स्ट टाइम ही गॉट इलेक्टेड इन द ईयर 2012, राइट. उसके बाद उन्होंने अपने 2022 में ही कंप्लीटेड हिज 10 years, एंड नाउ he has been elected for the third time as the president of China, Xi Jinping. Right, so Chinese President Xi Jinping, he has created history, as I have told you, and he has become the leader of the ruling party. कौन सी पार्टी है? The Communist Party, after party founder Mao Zedong to get re-elected for an unprecedented third term in power with prospects of ruling China for life. So basically यहाँ पर आपको सिर्फ इतना जानना है, Communist Party, Jinping is the name of the person. And ये एक standing committee थी, right, General Secretary of the Communist Party for the third 5-year tenure जो है वो बने हैं, एक 7-member का standing committee था, उन्होंने जो है उनको इलेक्ट किया है. नाउ इसके अलावा आपको जो और एडिशनल इंफॉर्मेशन जाननी है ऑफ रिलेटेड टू चाइना, आपको पता होना चाहिए कि चाइना का कैपिटल क्या है. इट इज बीजिंग, हमें पता है. चाइना का करेंसी हम सबको पता है, चाइनीज युआन, राइट. Most of us know that the currency of China is Chinese yuan, but Chinese yuan जैसे हमारे यहाँ INR एंड रूपी, हमारे यहाँ INR एंड रूपी को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है. गाइस, क्या हमारे यहाँ INR एंड रूपी को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है इन इंडिया? इज दैट द केस? We use INR and rupee interchangeably. Likewise, in China, yuan, that is Chinese yuan, and renminbi, right? Chinese yuan and renminbi are used interchangeably. तो अगर आपसे कोई ये पूछे that what is the currency of China, okay? What is the currency of China? And अगर आपके पास चाइनीज युआन ऑप्शन में नहीं हो, renminbi हो, तो आप वो भी मार्क कर सकते हो, right? So these are used interchangeably, right? Now official language of China क्या है? Official language of China Mandarin है. कुछ लोग चाइनीज भी बोलते हैं. If Mandarin is not given in the options as an MCQ, तो आप चाइनीज भी मार्क कर सकते हो. Is it clear, guys? Is it clear about the additional information? I hope Tisha, Ananya, Sayansh and everybody who's there in the chat, Ritu, आप सबको क्लियर हुआ होगा about this election of the new president. Okay,
Moving on, we have the next news. Very interesting news जो हमें दिवाली के दिन ही मिली थी. 24th of October was Diwali when we observed Diwali this year, and जब पूरा देश हमारा busy था, we were bursting crackers, we were wishing Diwali, we were posting very cute ethnic wear में अपनी Instagram stories and reels, we were clicking pictures, we were sharing pictures, posting pictures. उसी टाइम पर एक और न्यूज़ आई थी इंस्टाग्राम पर. आई एम श्योर टीवी तो उस वक्त नहीं ज़्यादा लोगों ने खोला होगा, बट सब लोग अपना सोशल मीडिया ज़रूर स्क्रॉल कर रहे होंगे, रंगोली के फोटोज़ ये वो. उसी टाइम पर, इसलिए आई एम रेफरिंग टू सोशल मीडिया, उसी टाइम पर किसने उसी टाइम पर रात में कुछ 8-9 बजे के करीब सोशल मीडिया पर ये न्यूज़ देखी थी? How many of you have seen this particular thing? You could have either seen it on Twitter or Facebook or maybe a WhatsApp forward or Instagram. So for sure there was there if you follow the newspaper pages and all. But yes, this was the news that had happened. Indian origin Rishi Sunak is the new UK Prime Minister. Okay, and for obvious reasons, it was a very proud moment for all of us. And yes, बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे कि हमारे ऊपर 200 साल राज किया, and now we have become or Indian origin person has become their prime minister, right? Now, one thing that you should know is, yes, he is a person of the Indian origin, but he was there in the active politics of UK already. Right? It's not like a random person has been chosen and a random billionaire or a random industrialist or right, they have been chosen as the prime minister. No, it's not like that. He was there in the active politics before he became the prime minister. Okay, so Indian origin Rishi Sunak has been appointed as the prime minister of UK, right? And अगर आपने देखा होगा अभी आजकल न्यूज में, नॉट आजकल, इस साल न्यूज में काफ़ी ज़्यादा यूके के प्राइम मिनिस्टर के बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ थी. अभी आपके अपॉइंट हुए हैं ऋषि सुनाक. ओके, ऋषि सुनाक से पहले जो थी, कौन थी? इट वॉज लिज ट्रस, एंड उससे पहले थे बोरिस जॉनसन, राइट? सो in this particular year, actually, UK has seen change in 3 prime ministers, actually, right? Liz Truss, I think, had a tenure of 45 to 50 days, if I'm not mistaken, roughly 40-50 days, right? So yes, now this news is important that first British Prime Minister of Indian descent is Rishi Sunak, and how he is related to India, because see, his parents were pharmacists. His parents' roots are there in India, in Punjab, and that's the reason why we say that he's related to India or he's of Indian origin. However, he was born in UK only, and there's this one interesting fact about him as well, that we know Mr. Narayan Murthy, who is the founder of Infosys, and we know author Sudha Murthy ji, right? She's an author, she's a philanthropist, and Rishi Sunak has got married to their daughter as well, right? So that is also one of the reasons that how he is still related to India and the roots. Okay, so again, Rishi Sunak won the race for the Conservative Party leadership, and he has become the youngest Prime Minister of UK, right? He is, I think, 42-43 years old, if I'm not mistaken. He was born in 1980, so yeah, you may do your maths. 42 years old, right? And yes, when Liz Truss resigned from the post, Liz Truss was there for good 45 days, as I've told you, right? And even less than 50 days. So there are 2-3 important facts which has come. Number one, that Rishi Sunak has become the youngest PM of UK in 2 centuries in 20 years. The second important fact is that who has become the shortest serving PM of UK or shortest serving Prime Minister in the British history? It is Liz Truss, and it's not even 50 days.
right? And I have told you about the parents of Rishi Sunak, that his parents' name is Mr. Yashveer and Miss Usha. They both are pharmacists and they have migrated to UK from East Africa, but they still have their roots in Punjab in India. And that is how Rishi Sunak, we say, is a person of Indian descent, and he is the first British Prime Minister. Now we have a lot of news, we have a lot of reels, we have a lot of videos about him. So I think by now you all are pretty much aware about who Rishi Sunak is and how he has been appointed, right? So currently it is Rishi Sunak, unse pehle Liz Truss, unse pehle Boris Johnson. Okay, moving on to the last news, we have Netherlands beats China, become India's third largest export market. Now एक question business and economy का जो बहुत ज़्यादा, now again I'm telling you, this is a news from business and economy. बिजनेस एंड इकोनॉमी कैटेगरी से एक न्यूज हमेशा, या फिर न्यूज भी नहीं, एक क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाता है दैट इंडिया का एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन कौन है, राइट? सो इट इज नेदरलैंड्स, इट हैज बीट चाइना एंड हैज बिकम द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट. अब जो मैंने थर्ड लार्जेस्ट की बात की है तो आपको फर्स्ट और सेकेंड भी पता होना चाहिए. सो फर्स्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट इज यूएस, second is UAE, United Arab Emirates, third पे we have Netherlands, right? On fourth we have China, and on fifth we have Bangladesh. Okay, so these are basically the top 5 export destinations of India, right? अभी क्या है, ब्राज़ील जो था वो लास्ट डेट वाज ऑन 21st स्पॉट, बट अभी अगर करंट का देखें तो 8th बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है, राइट? एंड अभी आपके लिए जो 5 नेम्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दीज आर द टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस ऑफ इंडिया. पहला है आपका यूएस, देन सेकेंड नंबर पे यू हैव यूएई, ऑन थर्ड यू हैव नेदरलैंड्स, ऑन फोर्थ यू हैव चाइना, एंड ऑन फिफ्थ यू हैव बांग्लादेश, राइट? एंड यस, ये आपकी जो नई लिस्ट है वो निकली है. Okay, I hope this news is clear to you, and with this we have covered all the important news from the 25th of October to the 30th of October. We will have another session on Friday, right, which will cover the news from this Monday to Thursday, of course, right? And yes, thank you so much guys for staying tuned. आई होप आपको सब समझ आया होगा. आपने अगर नोट्स बना रहे हो तो आपने नोट्स बनाए होंगे, राइट? कीप स्माइलिंग गाइज, कीप रिवाइजिंग, एंड येस, डू स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज वेल, बिकॉज festivities are over and we need to get back to track, right? We need to get back on track and we need to do our studies, right? Okay, so thank you so much guys, and yeah, take care. Subscribe to Pratham Test Prep channel if you haven't already. Hit that like button if you like this video, and I shall be meeting you super soon on Friday. And this is Juhi Sharma signing off. Thank you guys. Bye bye.